क्योंकि हमारे पास संस्कृति संस्कार निष्ठे परिवार, हम दवा देने वाली तुलसी, पानी देने वाली नदी, दूध देने वाली गाय। देखते हुए महेंद्र ऊपर साहब महेंद्र अतुल प्रकाश वाजपेयी मेरी तरफ से ग्रहण करने की कृपा करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पे आ जाए, इससे एक ग्रुप फोटोग्राफ। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा तो जोश दिखाइए ना। फाइनली स्टूडेंट्स जो ये एलसीडी और इसको डील कर बालकिशन we will live that life if we used to live in 1 minute.
बस और ये ठीक और उसमें झलकती है। और जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या नहीं पाया, जिसमें कई मिक्सेस थे, जिसमें विजुअल्स का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था और उसी विजुअल्स में उन्होंने कुछ सधे हुए वाक्यों को जोड़ा और कुछ कथाओं से, कुछ कहानियों से उसको जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया। इसी कहानी, इसी उद्देश्य या यही गोल, यही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मैं अपनी एक छोटी सी घटना पेश कर रहा हूँ। जैसा कि जब हम बीटेक कंप्लीट करते हैं, एमटेक करते हैं और पीएचडी करके पागल हो जाते हैं, तो उसमें से 87 बैच का एक मैं पागल आपके सामने खड़ा हूं, जिसने केवल एक ही उद्देश्य के साथ कि मेरा टेस्ट से लगाव था। और मैं आपको बताऊं कि बीटेक करने के बाद मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक जॉब लगा, वो भी लखनऊ में, लेकिन मैंने उसको इसलिए पकड़ा या इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि कंप्यूटर में मेरा कोई ज्ञान नहीं था। और उसके बाद मैंने एक वो रास्ता चला जो उस समय लोग भाग आते थे लुधियाना से, हमारे मौर्या जयप्रकाश जी, विनोद यादव, ये वो वहाँ लुधियाना में गए। उन्होंने कहा नहीं वो तो दिनेश तो आएगा नहीं, वो तो वहाँ नौकरी छोड़ करके क्या करेगा, वो तो एमटेक करने जाएगा। लेकिन मैं वहाँ भी पहुँच गया और मैंने पहली जॉब लुधियाना में ज्वाइन किया। लेकिन एक किस्मत थी कि हमारा डेस्टिनेशन था कि मुझे रिसर्च में ही आया था और मैंने IIT से एमटेक किया हमारे देश के साथ। लेकिन मैं ये घटना जो कि जगमोहन की गई प्रेजेंटेशन से जुड़ी है, पीछे मत देखो। आप जो भी करते हैं एक आगे देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। मेरी ये घटना अपने लाइफ मीडिया लाइफ बहुत ही साइंटिस्ट बनकर देखें, ये टीचर बनते बनते ये तो बोरिंग हो जाएगा, वही पुरानी चीजें। साइंस है, एक साइंटिस्ट ऐसा है कि आप नया जितना करेंगे, जितना नया सीखेंगे, यू विल एंजॉय। तो यही इसी तरह से मैंने सोचा और सोचने के उपरांत मैंने एक डिजाइन कर दिया आगे देख करके। लेकिन जब मैं यहाँ से कानपुर से झांसी पहुंचा तो मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार कानपुर में था। मैं 20 ट्रेन में उतर गया और मेरी ट्रेन चली गई। That wasn't ticket, but that not valid because that train has been gone. उस विक्रांत जो कि वेटिंग रूम में एक तो मुझे हैदराबाद टिकट में यही उतर गया, मेरे पास टिकट है। उस आदमी ने मुझे एक ही वर्ड बोला, ऐसा पीछे मत देखो, आगे जाओ। आपने कुछ सोच कर ही वहां से रिजाइन किया है, अब आगे बढ़ो, यू विल एंजॉय, यू विल बी रीच एट द हाईएस्ट पोजीशन। एंड उसका शब्द मुझे आज क्योंकि मैं पुरानी जगह पर आया हूँ, वो पुराने जो हमारे रिश्ते थे संस्थान से, इस शहर से, इसलिए मुझे सारी चीजें याद आ गई। तो कहने का मतलब है उसके बाद मैं आगे गया और आज अपनी अच्छी पोजीशन में मैं अपने इस बार छोटे से प्रेजेंटेशन में यही कहना चाहता हूँ कि जो रिसर्च है, रिसर्च ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और वेस्टर्न रिसर्च को आप छोटा न समझिए, एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें सभी जो भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट
उनके लिए करियर की अपॉर्चुनिटी मिलती है। If anybody is much more passionate and much more dedicated towards the merchandising and financial sector of the textile industry, so it is a good decision, or it is time to take a time for doing the job of the manufacturing industry. Okay, I'll let this answered by Sanjay. Sanjay? Yes, please repeat the question. Sorry. Yes, sir. Respected sir, my name is Rajmata. My question is that if someone comes to textile industry and textile and in place of manufacturing industry, I want to enter in the merchandising and the financial sector aspect of the industry. It is a good decision or should remain in the textile manufacturing industry? You are not clear. Do you want to go to financial sector or you want to go to Apple merchandising? You be clear. One thing, Apple merchandising or financial sector? Merchandising. You can take lead from textile to fashion. You can go for NIIT. You can go for NIIT or any other polytechnic institute also where you can go for Apple merchandising. If you have the will, if you have the goal, if you have the creativity in your mind, designs come like dreams for you, or Apple or fashion comes as a dream for you, then I think, as Jaguar said, you should be very clear, lesson like goal for you, and you should go into that, and you can easily go. कहा जाता है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, उनकी बेस ऐसा कुछ नहीं। आप देखो NIT के बच्चे हैं, बहुत अच्छा डिजाइनिंग करते हैं, उनको फैब्रिक का आइडिया नहीं होता, लेकिन फैब्रिक कटिंग और फैब्रिक डिजाइनिंग बहुत आती है, उनको कटिंग आता है, गारमेंट मेकिंग आता है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जाके वहाँ पे इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाता है, थोड़ा सा एज मिल जाता है, बट अगर आपको आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो आप अगर आप सीधे डायरेक्टली अपने मर्चेंडाइजिंग भी करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में आते हैं, समझ जाएंगे कि बीच में होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होता है, उसके बाद आगे आएंगे, तो नथिंग लाइक इट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले मैन्युफैक्चरिंग जाओ उसके बाद जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। You could, I feel, consider doing an MBA. Yes, sir. You could consider doing an MBA after your engineering, so that you have an idea of the marketing and financial sector. That is something which you can do. Respected sir, my name is Venu Mishra and I have a question that getting into an industry and then opting for a garment sector is good, or just completing an MBA and then opting for a marketing sector in textile industry is good? No, you don't change into the garmenting sector after doing the MBA. You don't do that. Sir, and while being in industry, for example, I am in industry and I have been switched to the garment sector and then I am pursuing my MBA. So will that be allowed, and if that is allowed, then why not doing an MBA and then entering a textile industry? MBA is allowed at any point of time if you are a graduate in any stream. So therefore doing MBA. It is always advisable by the experts, by the career counselors. The RCS with that you should not be coming to this field. So we were right in this. So sir, my question is that you are experts and you are all there. So what is good for us? Means in textile if we are active, then what we could do so that we can get success in this field? First of all, you have R&D, you have marketing. Marketing is there for you, and so there are a lot of other things also associated with textiles which girls are doing, getting into the fashion technology, getting into the garmenting sector, be an entrepreneur, start your exports. So there are a lot of opportunities. ऐसा नहीं है कि girls के लिए opening नहीं है. Yeah, garments will be all after doing job we can have and what is better? When talking about a career, there is nothing better or worse. It is one's own liking and the attitude which will actually lead him or her to that career. तो एक तो career अगर आप मेरे से पूछे, apparel merchandising is
solely maintained by girls only. Boys को घुसना वहाँ बहुत मुश्किल है. I am one of the booked bogey. Anything else? Changing my stream from textile to anything else. So how to join the public sector services? No, I didn't get your question. Sir, how to join the public sector services by pursuing my career in textiles only? You have to join the service? Public sector, sir. Public sector. Yes, sir. So there are a lot of opportunities you have. People from our Sir, besides teaching, I want to know. Please, I'll let somebody answer. You can you can compete any exams. And see, I also did my BTech from this institute. Yes, sir. After passing at your age, there is a lot of confusion in the minds. I was also frustrated, but there should be some clear idea in your mind. A lot of chances are there. You can compete any exam, right from banking. My batchmate is in the banking side. I am in the central government services. Mr. Atul Bajpai is in the banking side, and I think Trivedi is in the railways. A lot of scope is there. I don't agree. Sir, I do agree that there is a lot of scope. But sir, my question is why not changing my stream? Means pursuing public services while serving in textiles only. So I am in the textiles. I am working as a assistant director in the Ministry of Textiles, because the chances are there. You should be in the textiles. There are a lot of services are there in which you have to qualify the exam in a particular field. If you are in the textile side, then you have to opt the subject is a textile and you will complete the exam. It is not necessary you have to take the physics, chemistry, maths and all that. It is not. I also qualified. That is what I wanted to know, because a majority of my batchmates and my colleagues, sir, they are mainly interested towards and mainly inclined towards the private sector services. See, private sector. They start the career in the process control, quality control departments. You will have a lot of scope where the girls are preferred, because in the production line you may not feel comfortable also working on the shop floors. But for the girls, it will be always advisable to start their career in the process controls, in the labs, in the technical services. I think these are the areas, whether you are going for the private sector or you are going for the public sector companies, you can work in these areas. I think these are the areas. Other means if you are not opting for any other, means if you are working, you are proceeding to work with your graduation in textiles only, then these are the areas open for you. You can work in the marketing departments, you can work in the process control departments, in the technical services department and in the process control departments. I think these are the sectors open for the girls and will be advisable for you guys. Okay. Thank you, sir. Now this is the time to discuss about the placement opportunities. For this, I would like to call the placement officer or placement head of this institute, Dr. Alok Kumar ji. Sir, please come on dais. They are waiting for job. As we know, the global recession that have changed the possibility of a job in textile industry also. That's why we are facing this situation. Dr. Alok Kumar will discuss in detail regarding the actual situation of placement this year. So sir, please. Now, I have been given the extra charge of placement officer. I am working as an associate professor over here. Now, the placement scene at present is around 50 odd students have been placed in different companies. Bardhaman has come, Arvind has come, Raymond has come, Subhlakshmi has come, and Sarguja. So, in all these companies, around 50 odd students have been placed this time. So, we had lunch, we had everything. So, at last I like to request the alumni to help us in getting the placement done. So, I know most of